Just you are the Good. 100. Hmm. ಅದಕ್ಕಾಗಿ. So just give me 2 minutes. I'll just share the links in Instagram. Yeah. Hmm. So Liorgo, please introduce yourself Hmm. So with my name is okay. Kannadana ಅಲ್ಲ English? Both we can Both. use both Okay. languages. Yeah. Okay. So my name is Pratik Kumar. I'm from Mangalore, 32 years old. Mm-hmm. So I have been arm wrestling since 2019, like seriously. But I've been following arm wrestling since 2012 as a sport. Mm-hmm. But I started table practice in 2019. Then 2020, 2019, I met Erin Kundur, Manoj Devnath, Harsh. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆವಾಗ Okay. ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ Mm-hmm. 2019 ಹಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಮೇ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ 6 ಮಂತ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ Okay. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ Mm-hmm. ಇನ್ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಕೇರಳ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ Uh-huh. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಏನೋ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ BC ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡಾಗ್. ಸೊ Uh-huh. ಅವಾಗ Uh-huh. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇನ್ 2023 ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ Okay. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿನ್ಸ್ 2023 ನಾನು Mm-hmm. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ Okay. ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ 2012 ಇಂದ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾನ್. Mm-hmm. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೋರಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಜಾನ್ ಬ್ರೂಸಿಂಗ್, ಡಿವನ್ ಲರೆಟ್ ಎಲ್ಲ Mm-hmm. ಇದ್ರು Mm-hmm. ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ Okay. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಿನ್ Mm-hmm. ಕೊಂದೂರು ಇದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಪಾನಿಕರ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ Mm-hmm. ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ 2017. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಪಾನಿಕರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ Okay. ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಯಾವಾಗದು? ಪಾನಿಕರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. 20 Uh, ಐ ಥಿಂಕ್ 2018 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ okay. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. Uh-huh. ಸೊ ಅವ್ರು ಶೇರ್ Okay. ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ Mm-hmm. ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದು ಯಾಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ Mm-hmm. ಫ್ಲಾಶ್ ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಿನ್ ಕೊಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಸೈಕ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಮನೋಜ್ ದೇವ್ನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಿನ್ ಕೊಂದರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಚರ್ಚ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್. Yeah, I was ಹ್ಮ್ just calling ಹ್ಮ್ to Barkath. So his phone ಓಕೆ. has ಹ್ಮ್ some issue. So the counselor and ಹ್ಮ್ phone ಮಾಡಿದೆ. So please take us through your achievements, nationals, states. ಹ್ಮ್ So how was it? How competitive? ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಸರಾ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2022 ಐ ಥಿಂಕ್. 2020 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂತು. ಐ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ 60 kg ಕ್ಯಾಟಗರಿ. Okay. ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಸದ್ದಾಮ್. ಸೊ Mm-hmm. ಸದ್ದಾಮ್ ವಾಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಅವನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 60 kg ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾ, Okay. ಲೈಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6 years ಅವನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ Mm-hmm. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೈಸೂರ್ದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲರ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Okay. ಐ Who's that? ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅವರು. Okay. 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 So ಸತೀಶ್, he's not sure. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ. Okay. Mm-hmm. Okay. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ Okay. ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಫ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸತೀಶ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. Uh-huh. Okay. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಇದು
BCI ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಆದೆ. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ BCI ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ BCI ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಸರಾ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. And again in this year's states I won gold. You won gold. Under Wow. 60 kg. Right hand, left hand, both? No, only right hand. I didn't participate in left. Okay. So welcome, Barkath. Good evening. Good evening. Yes. So Barkath, Pratik was introducing himself, तो उनके बारे में बता रहे थे. तो आप भी थोड़ा आपके बारे में बताइए, आप आर्म रेसलिंग में कैसे आए और आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका मेजर मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला और आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है अब तक, तो वो थोड़ा आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा. ऐसे तो मैं अभी सिर्फ 8 मंथ से अभी स्टार्ट किया है. मैंने खेलते हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं. तो यहाँ से मैं एक नेशनल खेला हूँ, इतना ही, और एक दशहरा खेला हूँ, और एक यहाँ का पाफी का एक स्टेट खेला हूँ, उतना ही. और पाफी के स्टेट में दोनों में भी गोल्ड हुआ था, नेशनल में भी गोल्ड, और दशहरे में मेरा कुछ प्लेस नहीं हुआ था, 4th प्लेस आया था. ऐसे तो अभी मैं ज्यादा कुछ आर्म रेसलिंग के बारे में जानता नहीं हूँ. अभी भी नए से स्टार्ट किया ना, इसीलिए. और अभी मैं सिर्फ ये गेम खेलने के लिए ऐसे ही आया था, सिर्फ ऐसे ही पार्टिसिपेट करके ऐसे ही आया था, इसीलिए अभी इसमें थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं. देखना है आगे क्या होता है. तो 8 महीना जो आप बता रहे, 8 महीना? हाँ, सिर्फ 8 महीना? हाँ, इतना ही हुआ है अभी. तो आपका जस्ट एक रीसेंट वीडियो देखा मैंने, शायद कब है पता नहीं, लेकिन आपने एक कोई तो आर्म रेसलिंग का एक एसोसिएशन में खेला था आपने, तो उसमें आपने लेफ्ट हैंड में आपने किंग्स मूव करके आप खेल रहे थे. तो ये किंग्स मूव तो साल भर लगता है उसको सीखने के लिए, अचीव करने के लिए. वैसे में तो मुझको अभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, सिर्फ अपने पावर के हिसाब से खेल रहा था. अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, वो किंग मूव है कौन सा है मुझे पता नहीं था. अच्छा, ऐसे ही मैं खेल कर जीत चुका था, मुझे तो उतने बारे में पता नहीं. वाह, ये होता है गिफ्टेड. मतलब आपके पास वो टैलेंट है, तो उसके ऊपर आप कैसे हार्डवर्क करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, आई थिंक दैट विल बी प्लस एडवांटेज फॉर यू, और ऊपर जा सकते हैं, अपना एक लेवल बना सकते हैं इसमें. तो वो एक चीज है. और 31st मई आफ्टर 3 o'clock हमारा मैचेस शुरू होने वाला है. 3:30 के आसपास शुरू होगा. प्रतीक वर्सेस बरकत, ये वाला हमारा सुपर मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. किंग्स मूव भी आपने खेला है, तो आई थिंक प्रतीक को सिर्फ इतना पता था यू आर द हुक प्लेयर. जब आपका वीडियो मैंने देखा तो आप किंग्स मूव भी खेलते हो. सो दैट्स अ ग्रेट मैच, अलग ही लेवल का मैच होगा. एंड प्रतीक, टू यू माय फर्स्ट क्वेश्चन. So what's your plan for this match? What's your mental plan? What's your strategy for this match? There is no plan as such. Since you have watched a lot of videos, right? You have watched his videos, right? Yeah, his matches. No, I don't think he's, like you said, he joined recently to arm wrestling, so I don't know much about him. But I know Saddam, ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮೇ, ಟಾಪ್ ರೋಲ್ ಅದೇ ಆಡೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹುಕ್, ಐಲ್ ಪ್ಲೇ ಹುಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಹುಕ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ compared to before. Okay. So बरकत, आपका प्लान क्या है? आपका स्ट्रेटेजी क्या है इस मैच के लिए? आपको जीतना, ये डेफिनेटली किसी को अच्छा नहीं लगता हारना, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए? ये तो मैं बोल नहीं सकता, खेलने के बाद ही पता चलेगा. अच्छा, खेलने के बाद ही पता चलेगा. वहां पे जो होगा वो मंजूर होगा, इतना ही. अच्छा. तो
Pratik, the moment you know got to know the super match is gonna start, so have you started immediately? You know, started preparing yourself for this match immediately, or you took little bit time No, and started? I took time because of my leg injury. I couldn't walk. I couldn't walk properly. So I was in bed ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಮೇ 15th ವರೆಗೂ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಹೀಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ಇಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 10 days ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Only 10 days. ಹಾ ಯಾ. Wow. Okay, okay, okay. तो बरकत आप बताइए. मैं भी वर्कआउट में तो थोड़ा कम ही हूँ, क्योंकि मुझे काम से 9 बजे आने को रहता है ना, इसलिए थोड़ा कम ही मैं वर्कआउट भी पहले से भी मेरा कम वर्कआउट तो कम ही होता है. जो भी टाइम मिलता है उस टाइम में जिम जाके वर्कआउट करके आता हूँ. Okay, ज्यादा okay. वर्कआउट के लिए टाइम तो नहीं निकाल पाता मैं. Okay, okay. So Pratik, I'll go deep a bit with your history. Okay, before we get into the super match, some questions. How strong the rivalry that you have with Saddam? He just texted hi in the WhatsApp group just right now. Yes. So what they like, I had to, ask this question to you. So please take us through. I Yeah, know there is rivalry. I knew he was like the best in under 60 kg. Since like I said, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಟಿಲ್ 2022 ಏನೋ ಅವನೇ ವಿನ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಡರ್ 60 ಅವನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನೇ COC ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಸೋತಿರೋದು, ಅವನ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನೆ ಸೋತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಸೋತಿರೋದು. ಅವನ ಜೊತೆ ಸೋತಿ ಬಟ್ ಅವ್ನು ವಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಥರ್ಡ್ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಸೋತಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. Then yes, those 2 times I lost with him, so that's why I wanted to have a super match against him. Okay, okay, okay. So what do you think? How strong are you right now? But So can you last ದಸರಾ ಆಫ್ಟರ್ ಪುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. like ಆಫ್ಟರ್ you ದಸರಾ ಸೈಡ್ ಪುಲ್ ಅಲ್ಲಿ flash No, pinned I him held it. No, I held it in the center and took control and I in the beat him. middle? Okay. Yeah. Okay. So how confident the moment you pulled him to the pin pad? So from then onwards, how strongly you're confident? Like if we have a super match, you will flash pin with 3-0. So do you have that kind of mindset right now? No. Flash spin, I don't think I can do. But his style is stylistically, it is little difficult for me. Stylistically, Reason? so Reason reason he's a he hook plays player or high what? hook. He plays high hook. It is Okay. not top roll. It is not hook. It is between that. So with Between that. side pressure, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಕ್, ರೈಸರ್, ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿ. It is very like not everyone plays that style, so it is very hard. Okay. So what's your preparations if you have a super match with him? The regular preparation that I do, but little more probably hook. Hook and strength. Okay. Yeah, hook and Okay. cupping. बरकत भाई, हाँ भाई. COC में कर्नाटका COC में अरबाज के साथ आपने क्या मिस्टेक किया? क्यों हारे आप? अरबाज के अब मुझे वहां पे ग्रिप ही नहीं मिला था. अब Grip ही नहीं रेफरी मिला? ग्रिप में हम नहीं मिला था, ग्रिप नहीं मिला था. अब रेफरी ग्रिप में हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो फॉल दे देंगे. ऐसा होके मैंने कुछ बोला भी नहीं. लेकिन मेरा अर्ली अटैक थोड़ा वीक हो गया, तो उनका स्पीड था अटैक, तो वहां पे उन्होंने ले लिया वो. ओके ओके ओके. तो बरकत, अगर आपको प्रॉपर ग्रिप देते हैं और आपको अच्छा खासा स्ट्रेंथ आपको लगता है कि आपका एडवांटेज है, तो आप आराम से उसको पिन कर पाएंगे? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल है. मैं ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि वो भी पावरफुल है, लेकिन ग्रिप मिलेगा तो थोड़ा फाइट तो होगी.
फाइट तो होगा, फाइट बट तो होगी, जीतेंगे नहीं हाँ आप फाइट तो होगी। या हारेंगे? जीतना की कोशिश करूंगा, लेकिन बोल नहीं सकते उसमें भी हम लोग, क्योंकि वो मेरे से सीनियर प्लेयर हैं। अब वो मेरे से सीनियर प्लेयर हैं वो, और पहले से खेल रहे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है गेम के बारे में, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है। तो ओके, वो कुछ भी प्लानिंग करके तो मार भी सकते हैं, बोल नहीं सकते। करके तो मार नहीं सकते डेफिनेटली, सो प्लान करके ही मारना हाँ। पड़ेगा उनको, राइट? ओ, ओके ओ, ओके, सो व्हाट्स योर current weight, Pratik? ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ 62 to 63. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆಯ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಐಲ್ ಬಿ ಇನ್ 59-60 ಅದರಲ್ಲಿ. 59 and 60. So your weight right now is 60? 63. मेरा वेट अभी 58 है। 58 है, ओके। सो इन फ्यूचर में गेन करने का कोई प्लान है या इसी वेट में आप खेलेंगे? ऐसा तो मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, लेकिन वेट गेन नहीं होता, क्योंकि नेचुरल करते हैं ना, वेट गेन नहीं होता, इसीलिए इतनी इसमें ही चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रतीक, व्हाट्स योर प्लान ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ to gain the weight in the future? ಗೇನ್ ವೇಟ್ ನನಗೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೇ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. Suppose in ಮೇ future ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 65 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ maybe. ಜಿಮ್ ಹೋಗೋದೇ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. So what's your dream weight that you are imagining? Dream That you weight want? would be 65 only. I think I'm better fit in 65 or 60. 60 and 65 is only the best weight for me. Because अच्छा, ನಂದು ಕೈ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ तो ठीक ತಿನ್ನಾಗೆ है. ಇದೆ. So Okay, as per okay. my physics, I have to go play in 60-65. हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके। तो बरकत, आपका ड्रीम वेट क्या है? आपको कहाँ तक आप आने का आप सोच रहे हैं? बरकत, आपका म्यूट हुआ है। भाई थोड़ी देर अजान दे रहे हैं, इसीलिए रुक म्यूट किया था। अच्छा, ओके 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 ओके, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ, प्रतीक और हाँ, who is the strongest, the most difficult and the strongest that you have felt till now till now in at Karnataka? any weight, at At any any, weight. any weight under 70 under, let's say, not more than that. 70 under, I would say Rahul. Rahul? Rahul, Uh-huh. Rahul in top roll, Rohit in hook, Arbaz in explosiveness, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ. yeah, then Saddam, but he's not as good as Arbaz, I would say right now. ಇರ್ಫಾನ್? ಇರ್ಫಾನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ರೆಫರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಇರ್ಫಾನ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ it was in a referee's grip, I was about to get the grip, he was like no. Then referee did regrip again. I was say my wrist was bent back, I was saying wrist. They started, I started with bent wrist and I lost. Oh, okay 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 So, okay. and So in Pratik, 55 I think he was the strongest. 55 uh-huh. kg, I think he was the strongest. He's the strongest. Okay okay. So Barkat, हाँ भाई। अभी तक आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट कौन है 67 65 केजी के अंदर? 65 केजी के अंदर ऐसे तो अरबाज भाई हैं, और हमारे हमारे भी प्लेयर्स हैं ना, वो भी 70 के अंदर है। हमारे सलाउद्दीन भाई हैं, उमर भाई हैं, ऐसे वो भी हेवी हैं। वो भी उनसे उनसे तो मैं जीत नहीं सकता, वो फुल अच्छा, हेवी है, तो वो है। और अरबाज भाई हैं, और हाँ इतने ही है। अभी तक तो इतने मैं ही? प्रतीक भाई की जोड़ तो एक बार भी खेला नहीं हूँ, तो बोलने मालूम नहीं है, अभी यही पता पहली चले। मैच है उनके साथ। हाँ अभी अच्छा पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आई थिंक आपने ये जो स्टेट खेला, कर्नाटका स्टेट, आई थिंक ये फॉर द फर्स्ट टाइम आपने खेला है ना? हाँ फर्स्ट टाइम खेला है, काफी का ओके, फर्स्ट टाइम खेला है। फर्स्ट टाइम खेला पार्टी का। ओके ओके ओके। तो
If you win, Pratik, if you win this super match, Yes. who should be your next opponent? Uh, Next opponent should Rohit. be either Arbaz or Rohit. Rohit, I not already Pratik. played with Arbaz once. Uh-huh. I haven't played with Rohit, but again, stylistically, Rohit is bad for me. But if I gain enough, if I go to the gym and lift heavy, I think I can beat Rohit. But ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And how about Rahul? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Rahul, you are Maybe once I 60, get a pulley system. 67. Yeah, Rahul right now is too strong. Yeah, maybe once I get a pulley system, maybe. Who knows? Maybe. Okay. So बरकत भाई, हाँ, अगर आप इस सुपर मैच विन कर लेते, तो who should be your next opponent? वही सेम जो प्रतीक भाई ने बोला, वही अरबाज भाई या तो रोहित भाई ही मिलाएंगे, क्योंकि हमारा वेट ही वैसा है ना, तो वही मिलेंगे हमको। नहीं तो Yes. 70 kg में कोई मिल जाएगा। आपको क्या लगता है अगर अरबाज भाई के साथ मैच होता है या रोहित के साथ इन 2 months, आर यू रेडी फॉर दैट मैच? या ऐसे मतलब हाँ, रेडी हो जाए। आप आपका लेवल अभी अभी जैसा है, अभी 2 महीने में वो भी ट्रेन करेंगे, आप भी ट्रेन करेंगे, वो भी स्ट्रांग होंगे, तो क्या लगता है अभी पहले से वो स्ट्रांग है, हम्म, राइट? तो पहले से वो स्ट्रांग है, तो आपको क्या लगता है 2 महीने में अगर सुपर मैच भी रखेंगे, आप जीत पाएंगे क्या उनसे? और कितना टाइम लगेगा आपको अगर उनसे जीतना है तो? कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जीत सकते हैं। हाँ। जीत तो सकते हैं, लेकिन हमारी हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ओके। ठीक है, सही. So Pratik, Yes. if you really want to pin Rahul, so how much time will Hmm. it take for you to beat him? Uh, it's more about what equipment will take and also time. Let's say you have Pulley system equipment, I everything, need. you have pulleys, Okay. all the setups that you have, and you Okay. have Then I time will. to train also. Yes. Then if I come to 65 kg, then I would need 6 months. 6 months, just 6 months. Yeah, if I train like seriously for 6 months, complete 6 months. But Uh-huh. that is only in ideal world. It is possible. Ideal world. Six Okay. So months, it's not but gonna every day happen. you can't train. But So realistically, maybe a year. maybe a year. All right, Rahul, I think you're watching this. So he's telling realistically in a year he's gonna flash pin you, not flash pin you. Yeah, he'll defeat you. He will pin you like 3-0. So from today onwards, like what's the day? 28th May 2025, 28th May 2026. Note down this date and time. All right. Okay, we'll have a super match right after a year. बरकत भाई, अगर आपको टाइम मिल जाता है, जैसे सेम क्वेश्चन हमारे प्रतीक को भी मैंने पूछा, तो अगर आपको अरबाज को बीट करना है, कितना महीना लगेगा आपको उनको बीट करने के लिए? जैसे वो पावरफुल है, आप बता ही रहे, अगर आपको सब टाइम तो मिल रहा है, आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है जिम के लिए, हर चीज है आपके पास, पुलिस सिस्टम, हर चीज है, आपके कोच भी है, सीनियर्स है, हर कोई है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना टाइम में आप अरबाज को डिफीट करेंगे? ऐसा है तो एक 4 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने में डिफीट कर सकते हैं। 4 से 5 महीने में? हाँ, ओके. फुल हेवी वर्कआउट के साथ डिफीट कर सकते हैं। हाँ. Okay. So, Pratik and Hmm. Barkat, the question that I have for both. Before that, Rahul, the only guy I would be happy to lose with is Pratik Guruji. So, can you read the comments also? Me? Yeah, The like comments. open YouTube. Okay, fine. So, Girish is, wishes, giving wishes to Pratik.
All the best, Pratik, bro. All right. So, bro, big fan. I don't know with to whom. Hitesh here. All right. So, the questions. Let's move further towards the questions that I have for you both. Pratik, if you are winning, what Hmm. is the number? Is that 3-0, 3-1, or 3-2? Uh, it Based on your depends. experience. I don't mind if it is 3-1, 3-0, 3-2, as long as I have control. Like I know that I'm going to win. So it doesn't matter. Like, ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ Mhm. ಐ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಹೋಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ Okay. No, no. 3-1 or 3-2. That is what you're saying. So you will lose ಮೇ one, ಬಿ two ತ್ರೀ matches. ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ 3-1. ತ್ರೀ You will ಒನ್ lose one ಯಾ match to him. ಯಾ So when ಎಸ್ is that? In the first round or second round? ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ First round. ಯಾ Mhm. Okay. Okay. So what if it is happens it okay? happens in the first round. Okay. Okay. If you're losing in the first round, I'm sure Barkat will drain your energy because he has very good endurance power. But what's your even you have very good endurance in the offensive side. Defensive side still, I think, I think, yeah, your offensive is little weaker than your Defense. defensive is really good. Sorry, Hmm. offensive is really good, but your defensive is weaker. That is what I feel. So you agree with Okay. this? Yeah, I agree with this, but if I lose my center, then I'll let go the match. I'll not try to hold. Smart So that is what boy. I usually do. If I that is what I usually do whenever I lose center. I Mm. just let go instead of only in super matches. Just let it go. Okay, so this is Hmm. Mindaga's Tara Taise, Exact, his game plan. That is what he does in exactly. his game plan. Yeah. Uh, Yes. Barkat bhai, हाँ. इरफान इरफान भाई आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, विश कर रहे थैंक यू, थैंक यू, हैं. थैंक यू और इरफान बरकत भाई. भाई आप ओके, सो बरकत भाई, हाँ. अगर आप जीतेंगे तो 3-0, 3-1 और 3-2 में जीतेंगे. इंशाल्लाह ट्राई करेंगे. तो 0 से 3 हराने का ट्राई करेंगे, लेकिन हाँ, होगा या नहीं ये तो पता नहीं. लेकिन ओके. खेलने के बाद इंशाल्लाह ट्राई करना जरूरी है. 0 से हराने का ट्राई करेंगे. हाँ, 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 हाँ. उसके ऊपर ऊपर वाला जानता है कि वो क्या होगा. अच्छा, तो प्रतीक हर टाइम हुकर के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. जैसे उन्होंने बोला, रोहित हम्म. इज अ डीप हुकर एक्चुअली. तो जब ये डीप हम्म. हुक करते हैं उनको प्रॉब्लमेटिक होता है. तो हम्म. आपका स्ट्रेटेजी क्या है? मेजरली आप डीप हुक करके उनको थकाएंगे? क्या है आपका प्लान, गेम प्लान 3-0 का? ऐसे तो कुछ भी नहीं है. जो जो हुक में मिलेगा उसमें ही ट्राई करेंगे. ऐसा थकाना वकाना तो कुछ भी नहीं है, ओके, क्योंकि वो करना है भी तो सिर्फ हाँ. punishment करना है, नहीं तो थकाना नहीं है. हाँ, नहीं है. अच्छा, 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 अच्छा. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट. सो प्रतीक भाई, Yes. let's move further with the training part. Okay, so what's your Hmm. favorite lift and what's its PR? PR and all I don't have. I don't track PR. But my favorite lift since I started arm wrestling is like back pressure rising. Mm-hmm. That is how I saw my growth because of rising back pressure. Okay, so what's And your that PR and in raising? I don't know. I mostly train with resistance band. I don't have a PR. I have a 16 kg weight. I'll do it 16 kg weight. Your So if reps I go in to a gym, uh, reps I'll do 6 to 8, sometimes reps in 10. 16 Most kgs. some, but mostly I do static. I like to do static lifting. Mhm. Okay, Static is okay, better, but you need to give rest for that. Like, you have to give mm, a big amount of rest. okay, Hmm. okay. So So more like 90% of my training has been with resistance band since I started arm wrestling. So wow.
Maybe that is why my growth is very slow. I was about to tell that. Yeah, that So is. your growth is yes. So you have to, Mm. peak up because it's been how many years? 7 years now. 2019 is 2019. Yeah, 6 years. 6 6 Yeah, years. you're supposed to be Mm. international right now, but yeah, due to circumstances, I understand that. But yeah, you have a lot of Mm. potential. You just need to, Mm. come out of that, zone, and you have to think, Yeah. you know, push yourself. I think in the Mm. future you will do it because now the arm wrestling, is growing like anything. So there are Mm. a lot of events are happening, super matches are happening, competitions are Mm. happening. So I think this is the best time to push yourself. That 6 years of experience, what you have, put Yeah. here and build some strength. And I'm sure, Mm. Jay like, you know, as a Barkath or any of the new beginner, athlete, Mm. their tendons, Yeah. your tendons has a lot of difference. So you have that, Yeah. plus advantage where you, push faster, you climb faster. No, I would say people Mhm. who are young. I don't know Barkat age ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but I think Barkath, young your people age? have. मेरे 20 साल, 20 years. Yes. Oh, Yeah, okay. Youth में हो. yeah, Mhm. yeah. Teenagers Yeah. have the most potential to grow compared Mhm. to. I started when I was 27, Mhm. so ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು. Same ಯಾವ here. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ Okay. ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ Mhm. ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು Mhm. ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಟರ್, ಒಳ್ಳೇದು. Better ಆಗುತ್ತಾ? Okay, okay, ಹ್ಮ್ okay. ಬಟ್ technique wise, I think with the 6 years of experience, I learned a lot of it, mainly because of table practice. Mhm. Okay, okay. So बरकत भाई, हम्म, आपका फेवरेट लिफ्ट क्या है? फेवरेट लिफ्ट ज्यादातर होल्डिंग करते हैं और हम्म, कपिंग का ही है। हम्म। और होल्डिंग उसका पीआर कितना है मैक्सिमम वेट? मैक्सिमम तो ऐसे 50 केजी तक तो होल्ड करके उसके ऊपर एक 10 केजी चढ़ाएंगे तो वहां पे बस हो जाएगा। ऐसे तो पीआर अभी तक काउंट नहीं किया है हमने, कितना होता है कितना नहीं। तो जितना हो सके, क्योंकि एक ही वर्कआउट नहीं करते, अब ज्यादा दूसरे दूसरे वर्कआउट करते रहते हैं ना, तो टाइम कम रहता है, तो जल्दी जल्दी करने का रहता है। Okay, okay. Fine, fine, fine. So in a week, how many days do you train? Like both of you for a question. Pratik, you start first. Mm, whenever I get mood, I train, like mostly at night. I train, like I have resistance band. When I get bored, I just do some reps, some pronation, this thing, and rising and all that, and a little bit of side pressure. So Okay. it is, there is no routine for my training. I just do whenever I like, But is whenever it I'm bored. good for preps or what? If you want Not to. actually, but I think better would be table practice. You have to practice slowly in the table with the technique. That is, I think, the best way to practice, better than lifting weights and this. But none of them, 99% of the people don't do that. They just want to win in the table. That is, Mhm, if you have a partner who works on your weakness, strength, and do that slow table move. practice session, that is actually a movement. That is actually a table practice. That is actually called table practice session. But That's nobody right. does that. We just try to pin each other in the So why table. don't you acknowledge us in the Saturdays, table training? But the problem is we have only one table when there are like 25, 30 people, so we don't have time to do that. So you should Okay. have a table on your own at home, and you should have a partner with whom you can train. Mhm. Okay, okay. Barkat bhai. Hmm. हेलो बरकत भाई, हाँ बोलिए। आप हफ्ते में कितनी बार प्रैक्टिस करते हो? कितनी ऐसे बार तो एक प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन आप कितनी
बार आप प्रैक्टिस करते हैं? तो आर्म रेसलिंग में हमने सुना है कि वीक में 4 या 3 डेज आर्म रेसलिंग की वर्कआउट करनी चाहिए। तो ऐसे तो मैं भी ऐसे ही वर्कआउट करता हूँ आर्म रेसलिंग का। जो 3 दिन तो कर लेता हूँ, बाकी का जो बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट कर लेके वहां पे खत्म कर देता हूँ। आर्म रेसलिंग को ज्यादा वर्कआउट ओवर नहीं करते हम, थोड़ा कम ही है। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा। हमको सैटरडे के दिन शेर अली भैया वो आते हैं ना, वो आके हमको टेबल प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके ओके ओके। वही हमें सिखाते हैं, वही हमारे कोच है। ओके ओके ओके। तो अभी हमारे अब पास कितने दिन है, लाइक 4 दिन? हाँ दो, हाँ 2 दिन 4 दिन, 2 दिन हाँ 3, 2 ही ओके। दिन है, 2 दिन दिन है। है, ओके ओके। I think both of you got the locations, like where exactly it is, right? So it's in Yeah. Ullal, that there is a bhavan, उधर ही हमारा आर्म रेसलिंग का सुपर मैच होने वाला है। तो अभी आपका रेस्टिंग टाइम चल रहा है अभी दोनों का, लाइक हाँ Yes. बोथ ऐसे ऑफ तो, रेस्ट हाँ दे रहे हैं completely? हाँ. हाँ। So how are you resting, like icing this and that? So can you go through this? Just give like proper rest, no icing. I think I should start icing because after table practice session, I think for faster recovery, icing is necessary. I will start icing process, but right now just rest, nothing else. ओके 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 ओके। एंड बरकत भाई, आप कैसे रेस्टिंग कर रहे हो? आप, आपका प्रोसेस कैसा है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं वर्कआउट वर्कआउट कर नहीं रहा हूँ। ऐसा तो बाकी सिर्फ काम में जाते हैं, वो वही है। रेस्टिंग तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, ओके राइस वो वगैरह वगैरह कुछ तो नहीं है। ऐसे ही ज्यादा फ्री रहने का। ज्यादा फ्री रहने का बस। हाँ, ओके, फ्री सही रहने का। सही सही सही। और फॉर यू, बोथ ऑफ यू, लाइक लेट्स स्टार्ट विद प्रतीक। हु इज योर top 5 athletes in Karnataka? Top five, first is Shivaji for sure. We'll go with Like, the wait. We'll go with the heavyweight top 5. Then we'll go hmm, with the lower, like above 80, below 80. okay. Above 80, Shivaji, Uh-huh. then Sujit, Mm-hmm. then uh, Puneet or Sharath, Mm-hmm. then I think uh, sorry, I forgot Kenchappa. Kenchappa is second. Okay. I might be forgetting some names, but Uh-huh. if you can, uh, so Punit that's is what there. first. Shirley is there. Punit is there, Sharath is there. Shirley is So there. first is Shivaji, second Kenchappa, third Sujit, fourth Punit, fifth Sharath. Mm. Where am I standing then? You have to win the 80 kg. You have to beat Sherali and all that. All right, all right. This year the number I is think gonna sixth would be Sherali. Yeah. change this year. Hmm. It's gonna And be even I forgot Srinivas sir. Srinivas sir would be somewhere in top five. somewhere in top 5. All right, all Hmm. right, all right. So बरकत भाई आप बताएं, sorry, प्रतीक, below 80. Below 80, Shashi. Then First, first is Shashi, second uh, Dikshit is Rahul. there, is there, Second is Arbaz is Rahul. there, Rohit is there. Then who else? Second is Rahul. Third is Uh-huh. uh, Rohit or maybe Arbaz? Anand or Suraj. Uh, mhm. Anand or Suraj. I will come to know this weekend. So there is no Rohit Then and Arbaz. There Rohit. is Then no Rohit. Rohit. Then Rohit. Then Narbas. Then Arbaz. Okay, Yeah. okay. So what do you think? Arbaz, Rohit can't beat Anand. That is what you're saying? I'm not sure. Maybe. I have not seen them You play, have so I you have have no not. idea. Mhm. Okay, okay, okay.
बरकत भाई, हाँ। सिंस आप नए हो पर स्टिल ट्राई कीजिए, हम्म, अबव 80, बिलो 80, आपका टॉप 5 प्लेयर्स कोई भी रहने दो, कर्नाटक में कोई भी ऐसे तो रहने दो। हमारे शेरली भैया है, वो हम्म, फर्स्ट नंबर पे है हमारे लिए। वो हाँ, और केंचप्पा और हाँ, शौकत भैया और हाँ, हमारे इरफान भैया और हाँ, सलाउद्दीन। यही हम अच्छा, हमारे लिए यही बेस्ट टॉप है। टॉप प्लेयर्स है, ओके ओके हाँ, ओके टॉप ओके, प्लेयर्स है। ठीक है ठीक है। आई थिंक और एक दो तीन मैचेस अगर पाफी में आप खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन लोग हैं, क्या क्या हाँ, खेल वो और उनका नाम क्या है, तो ये सारी चीजें थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि अभी अभी आप आए हैं। तो डेफिनेटली आई कम्प्लीटली डू अग्री विद दिस। सो प्रतीक, I think I'll ask you this question, only you. The top five, night top 10. That is what I'll ask. Like, no, top five below 80, above 80 in India. In India, Mm, top five: first is Mazahir, second Yuvraj, third Siddhant, fourth Benjamin, mm, fifth maybe Satnam. So Kyle is Satnam or not. Denik. Satnam or Denik right now. Kyle, They are, he was in a break they for are a long below time. 80, right? They are below 80. No. Okay, they are in 80-85 range. So Yeah. they are in exactly 80. Okay. So let's Then get them into then below Kyle, 80. fifth Kyle. Fifth is Okay, Kyle. below 80, I think first is Satnam, second Denik, third Steve, fourth is maybe Vanch, fifth is I'm not getting Shivajit. Shivajit. So Shivajit is about Vanch. Sachin Bicep King. So you don't think No, no, Sachin Bicep no, King is no strong? Sachin, no Akash. Uh-huh. Akash is, I agree. Hmm. I think Sachin still I can count. All right. But right now So, there are a lot of good players. In under 80, there are a lot of good players. You don't know. This year's nationals will find out what will mhm, happen. A lot of new mhm, players. mhm. So Arbaz is asking, you are keeping Satnam or Denik? Yes, currently yes. Currently, yes. Hmm. So, like, on what basis can I know? Because Denik is a world's number two. Though there are World like number a two, yes. Hmm. but still he's world number two. But Satnam is never played any, internationals or world. So how do International, you he know? has not played, correct. But uh, seeing his performance in local national competitions, seeing how he's flash spinning uh, Harikomal Gill, then how he's flashing others like uh, was ex. Harikomal. He flashed Harikomal Gill every time Harikomal didn't have a pin with him yet, and he also beat Siddhant, who was in a very good form. So that is one more marker. Then he has beaten the He he had ever gone for a so one more point is he had gone for Asians after pool. So in 90 kg category, he beat the Kazakhstan guy very easily, who was the gold what? winner. He beat Pranjit Saikia. That Kazakhstan guy beat Pranjit Saikia, and this guy was toying with the Kazakhstan guy, Satnam. Mhm. So he was 90 So kg. that's the reality. That's what we are talking. Like after the match, Yes. does really count like after pulls, like because Yeah, on but the competition it that is doesn't competition, count. But the life is different. but you could see the potential. You could see See, how I strong. think you can, I can, debate on this because Hmm. you remember. Do you remember this guy like Joshua, right? Joshua Yes. versus the Assam. This guy, the what's his name? Assam, the short guy, the Manoj. who was Manoj Devnath. So he Hmm. posted one video like the last year's Asians where he easily holding him, pinned him, Hmm. That but was left hand. yes, he couldn't do anything in this Asian Hmm. Championship. Yes. So Hmm. there are a lot of differences in challenging in the championship and the after pulls. Yes. Yes. That is So true. yes, definitely, if Hmm. somebody is beating Pranjit Sakya, who is BCI's, the COC.
So that has a lot of says, like, it But says a what lot. I saw is I have not seen Satnam losing since a very long time Mhm. in his weight or in COC. Okay. That is What the I'm reason. asking is, what I say actually is, like, after pull, Hmm. I can even defeat, in our Hmm. strongest Karnataka players, but it Hmm. doesn't, even count actually what I feel. Yeah. The actual competition, if you beat, Yeah. that Hmm. counts. Yeah. Exactly. But he has beaten Siddhant, who was in a competition. Then again, So that he is a beat fair him, win. and he cracked his wrist and pinned him like anything. Yeah. 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 Yeah, That is also right. true. Yeah. But again, he is 90 kg. He is the third strongest in India, I would say. So beating him once is also a big deal. Hmm. Okay, okay. So you missed Mazahir Saidu, Yeah, I Abbas told him in Rana, the first. Oh, Abbas Abbas Rana, Rana, I missed. Yuvraj Yes. Yuvraj, Sharma. it's already told. Yuvraj is Okay, second, Siddhant is third, Benjamin fourth. So I think Abbas is fourth and Benjamin is fifth. okay, okay, okay. All right, perfect. So now I think, okay. So now there are a lot of heat is going on with the East versus West, Hermes versus Livan. So Hmm. Barkat bhai, मेरे को लगता है कि एरम्स इस बार जीत जाएंगे। Hermes gas मेरे नहीं। हाँ, इसमें वो जीत जाएंगे क्योंकि उनका अभी क्यों लगता है? बहुत वर्कआउट बहुत हार्ड चल रहा है। बहुत हार्ड हाँ, चल रहा है उनका वर्कआउट। और उन्होंने पिछली बार जो उनका फ्लॉप प्रेस यूज किया था, वो इस बार अभी वो ज्यादा हेवी उस पर फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं। राइजर और फ्लॉप प्रेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस बार वो जीत सकते हैं, जीतने के चांस भी हैं उनके। बहुत है। ओके, ओके, लेकिन ओके। लेवन लेवन तो उनके हिसाब से बहुत बड़े, वेट बहुत ज्यादा होता है ना, हम्म, तो मुश्किल होगा हम्म, एरम्स के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जो लिवान ने 180 किलो का चीट कर्ल किया, हम्म, एरमेस बोलता है हाँ। कि वो बैक वर्कआउट है, एक्चुअली बाइसेप वर्कआउट नहीं करके बोलता है, तो वो सच है क्या वो? अब क्योंकि वो बाइसेप के लिए तो पड़ेगा ही नहीं, वो इतना हेवी वेट तो बाइसेप के लिए तो लोड नहीं पड़ेगा। ज्यादातर अब अच्छा, पड़ेगा तो शोल्डर और एल्बो के लिए पड़ेगा ज्यादा। अच्छा, इसको एल्बो पर स्ट्रेच आएगा और बैक पर स्ट्रेच आएगा। तो ओके। बाइसेप पे तो ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा वो, तो क्योंकि आप, वो ईगो लिफ्टिंग होगा। ओके, तो आपको लगता है कि ये बेमतलब का लिफ्ट था लिवान का? हाँ, ऐसा ही लगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ठीक वो है। अभी तो एल्बो, इनका एल्बो स्ट्रांग है, तो वो हम्म, वहां पर तो वेट पड़ेगा, तो वो आर्म स्लिंग के लिए वो भी थोड़ा सही है। हम्म, लेकिन ईगो लिफ्टिंग तो है, ईगो लिफ्टिंग अच्छा, तो है ईगो वो। लिफ्ट है। ओके, 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 सही है, सही है। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। प्रतीक, व्हाट डू यू थिंक, हु विंस? I think if it is best of six, then Hermes will win. If it is best of five, I think Levan will win. If it is best of 6, Hermes will Six win. or seven, yeah, yeah, 6 or 7. If it is yeah. 5, Levan will win. okay. So So, Levan has endurance problem. uh-huh. That is the only reason. But we are Okay. seeing Hermes lift very. I think his PR is he has broken his own PR. Mhm. He's at his strongest form, but we don't see much of Levan's lifting. See, I think he's keeping it a little secret compared to Hermes. We don't know. So Okay. Levan also will come prepared. Mhm. Uh, so I'm favoring Levan little bit more, but Uh-huh. we don't know. But Hermes Okay. also might win. So, what do you think, Pratik, that 67 kg Hmm. reps he has done, riser reps, 67 kg, will that make Livan's finger a Hmm. problem for him? Uh, Maybe Back 67 pressure is of nobody can do. 92 kg of 8 reps. What do you think? Will that Hmm. make him a problem? Because he's majorly targeting the wrist, not the biceps.
he'll definitely Hmm. won't get into any hook, right? So what do you Yes. think? Can he crack the wrist this time? The way he He might be cracked, able to. the way He he might be able. cracked Vitali Yes. Laletin, though But his Hermes, liver was hmm, crazy, but still he cracked at yes, one point. So what do you think? Will that happen this time? Can we see that? it might happen. But Hermes needs to have strong biceps as well. If he has strong biceps, almost as close as Levan, then definitely Hermes is going to win. Okay. So I think, have you watched the recent post that Hermes posted in YouTube? Have you watched it? No, Where he no. is saying like, Livan, you are a cry baby. You're telling this, you're telling that, some bullshit, and you're drinking Hmm, Coca-Cola in between interviews and the matches, and hmm, you're telling Coca-Cola gives you strength, this and that. So now hmm, he's telling the point, the major point I want to, take it out here is, Hermes is telling there are people who lifted proper curl, not like cheat curl. It's a proper curl with hmm, 160 kg of 3 reps. He showed that video particularly. There are hmm, people there are non arm wrestlers, but still they lift bicep curl, proper curl hmm. with 163 reps. So 163. 160 kg of 3 reps. Hmm. 160 I think kgs. yes, 160 kg of 3 reps, and there is one more guy of 100 kg, Hmm, 100 kg weight, body weight, and he is hitting 140 kg of 6 7 reps. hmm, So his point of Hermes Gasparini, there are people who does even better than you, and you hmm, are doing that cheat curl for the back hmm, majorly. So hmm. there is no point of arguing. You're really doing for the bicep or you're doing for the back. Even the whole world is watching. That is what Yeah. he's taking. So what do you think on this? Yeah, but when you're doing cheat curls, you'll improve our explosiveness. That matters on the table. Cheat curls will help for arm wrestling. It is Do not you that really think you it's have to a maintain. cheat code? Because he, touched his, stomach, No, and from there he yeah, lifted. that is no. When you're dealing with so much weight, you can't take it slow. You have to I said look right, at your like safety also. there is a guy of one, non arm wrestler. He, Hmm, proper curl. I think you should hmm. go and watch that But video. He did like okay, 160 kg hmm, of 3 reps, proper three hmm, reps. hmm. Okay, Based on that but yeah, but that person might not be strong in all the areas. areas. Yeah, that is the So reason. what do you think? What do you think, Pratik? Hmm, Livan used to, uh, wrist curl for about 90 kgs earlier, and now he's hmm. not doing on that. He's not working on that. What is the reason Maybe behind it? he's, maybe he's not showing how much he's lifting. Maybe he's not Uh, revealing it. Maybe that is the okay. reason. Okay. All right. Because All if right. he reveals it, Admis will try to do more than him. More than him. So Okay. yeah. Okay. So now I think, for about how many days we have? Like 4 weeks, 3 weeks from now, like 2 weeks, When is the right? competition? I mean, when is the match? I think June 10th or 11th. I think around there. Until is like 12 days from now. Yes, 12 days from now. So let's see. I think, even I am giving a slight, you know, point towards Hermes because of his riser and his back pressure. That's a world record, and with a Yeah. good form. With a good form. Yes. If it is like, bad form, I wouldn't, go for him. But Hmm. yes, with a good form, Also, any that's idea really. what is Hermes' weight? Hermes's weight, as far as I have heard, is around 125. That's Okay. what his quality weight Hmm. he's stating. All right, I all think if right. he reaches 130, 135, then it'll. I think Hermes will take it Yeah. easily. Hmm. Hmm. I think even he doesn't believe in that way. That way, where, Hmm.
weight matters or something, where actually matters. But Mm. he's majorly focusing, that wrist wala part. So let's see, Mm. like, hope for the best, hope for, for both of them. So now let's move further towards our predictions here. Okay, so I think we come to an end. Okay, so the first prediction I want you to do for Salman versus Vignesh. I think Salman will win because he only plays hook and he's very comfortable in that position and he's very strong also. But if Mhm. it was some other player, some top roller, then it would have been interesting match. But hook to hook, I think Salman is better and stronger. Salman. ओके बरकत भाई, Hmm. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आपको क्या हाँ, लगता है? मुझे तो लगता है सलमान जी जीतेंगे। सलमान जी जीतेंगे। ओके, सो आनंद वर्सेस सूरज। प्रतीक। This will be interesting because stylistically Anand might take his wrist, but Suraj also is practicing in Mangalore with a lot of players. Last time I think they met, Suraj was able to beat him easily. Uh, I don't know if it was left or right, but he was able to beat him easily. Right in the left. Right. Yeah. So So Suraj was. I will, yeah, I think Suraj might win. Mhm. 55-45 to Suraj. Okay, and Suraj was Hmm. stating where, uh, when Anand, when I did, like, both podcast, Suraj was stating that, when he came to Mangalore and he lost. Hmm. Okay, so he lost to him. He couldn't do anything, and Anand was giving, reasons. So Hmm. he was stating, why reasons? When Hmm. I blasted you like anything. Hmm. So Anand's this one, you blasted me, that's fine, but this time you're gonna see Hmm. who's gonna blast. Hmm. So what do you think? Is it gonna be a heated, match Yeah, it will be. this time? Okay, But I because think Anand will be able to take his wrist, Suraj's wrist. But if he is able to cup from there or not, I don't know. But if he's able to cup from there, then it is Suraj's game. सूरज। ओके ओके ओके, बरकत भाई आप बताइए। तो मैंने तो उनका गेम देखा ही नहीं है, तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। ओके ऐसा है। ओके, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिसका गेम आपने देखा है तो उनका मैं पूछ लूंगा। सुजीत वर्सेस शेर अली। हमें मुझे तो लगता है शेरली भाई जीतेंगे। अच्छा, थ्री शेरली जीरो भाई जीतेंगे। हाँ, 3-0 से ही मारेंगे। हाँ हाँ, लेट्स गो। थोड़ा वो, हाँ, सही है ठीक है। तो प्रतीक, हु Yes. Think विंस? I think Sujit might win because I think his stop roll has become very strong. But if he goes into a hook, then Shera will beat him easily. But I don't think it will go into a hook हाँ, because I heard Sujit has leveled up like crazy compared to before. So his and lifts are very heavy. He's doing, let me lifting a lot of heavy. yes, let me add on this. Sujit, Sujit's video we have seen, like, as everybody, seen in our arm wrestling, community. Sujit did 95 kg one rep Back pressure. bicep curl, Oh no, and Sher that. Ali, Hmm. Sher Ali did 95 kg plus with reps, but we didn't see the video. But I think he has done the video, but that is 95 kg with proper reps. What do you think now, Yeah, if it goes to hook, then there is no chance for Sujit. But that Sujit? is what a top roller always has advantage. If he is Acha, explosive, then okay. he can open it. Okay, okay, okay. So, can you please take us through a bit, because in some other groups, there was Hmm. some hyped and some controversial things were happening between Junaid versus Suraj left arm. Oh, Suraj's left is very good. Even Junaid's left is good.
what was happening Uh, in some other groups? I heard like controversies happening, like Junaid will pin him like anything. Something was happening. Can you just say I'm something not about? sure. I'm not aware of this conversations, but Okay, I might be think, Ramos. yeah, I think Junaid will win unless he's overtraining. He's very Mm, good with left. His strength, raw mm, strength is like next level with left. next level. But even Suraj is good. His cupping is in a different level compared to his right in left Mm-hmm. hand. Okay, okay, all right, perfect. So बरकत भाई, जो आप जानते हो उन्हीं का पूछता हूं मैं। रोहित वर्सेस अरबाज। ऐसा तो लगता है हुक में आएगा तो रोहित भाई जीतेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, और रोहित भाई का होल्डिंग पावर भी बहुत ज्यादा है, वो टॉप रोल टॉप खींचेंगे तो भी वो फिंगर्स में होल्ड करेंगे। रोहित भाई का तो होल्डिंग ज्यादा है, तो मुझे लगता है रोहित भाई जीतेंगे। रोहित भाई जीतेंगे। ओके ओके ओके, व्हाट डू यू थिंक प्रतीक? This is going to be interesting. Uh, do you have any idea what their weights are? Their current weight is somewhere there, like they are 67, 65, 2 kgs, 3 kgs difference, not more than that. 67. Okay. Yeah, So I think Arbaz gets stronger as he gains weight. So if he's yeah. about 67, 68, I think Arbaz might Mhm. take the win because But as he he's said, explosive. mhm, He's explosive and he plays hook. He plays top roll. Rohit tries to hold and gets control there, okay, but okay. I think Arbaz has gotten I better think you compared to haven't before. come for some practice sessions. You must have seen Yeah, he I have. has finished some games. Hmm. Uh, But Ro- stylistically, if it is hook versus hook, right? So Arbaz can play hook also. He's explosive also. He'll take the center, Mhm, and he'll drain them out. So it'll mhm. become a battle of endurance. Whoever has better endurance will win. Uh, so what do you think? How So I'm favoring slightly endurance? Arbaz, like 51-49. 51 to Arbaz, 49 to Rohit. Oh, seriously? Yes. Because of Wow. styles. You Because of have styles beaten, and right? explosiveness. You have beat Arbaz, right? Yes. Yes. बरकत भाई, हाँ भाई। अरबाज को बीट किए हैं प्रतीक। 3-0, 3-0, 3-1, 3-0. 3-0 में। अभी स्ट्रेंथ थोड़ा पता चलेगा आपको, बट हाँ कॉन्फिडेंट रखिए। हर किसी का स्टाइल से स्टाइल डिफरेंट होता है, डिफर होता है, तो वो एक चीज होता है। या अरबाज भाई दशहरे में प्रतीक भाई को भी हरा चुके हैं, मैंने देखा है। वाव, Hmm. अरबाज रिसर्च, भाई हाँ, लेट्स गो। प्रतीक हाँ, क्योंकि नहीं, उस दशहरे में मैं भी था ना। अच्छा। वो दशहरे में मैं भी था। हाँ, ओके, मैं भी तो था ओके, वहां पे। प्रतीक प्रतीक भाई को अरबाज भाई ने तो वहां पे हराया था। हराया वो था, right. दोनों बार भी अरबाज भाई ने ही तो हराया। अच्छा अच्छा अच्छा, उस टाइम पे अरबाज भाई का फुल ऑफ फॉर्म था, बहुत हेवी हेवी थे उस टाइम पे तो। नहीं एक्चुअली अरबाज भाई का हाथ जो बना है ना, वो सिंगल मैचेस के लिए एक्सप्लोसिव, हाँ बट प्रतीक भाई का जो हाथ है ना, वो एंड्योरेंस वाइज सुपर मैच के लिए। तो अभी हमारे अरबाज भाई को यही बोलना चाहता हूँ कि अरबाज प्लीज वर्क ऑन योर यू नो मेजरली एंड्योरेंस बेस, क्योंकि अभी there are a lot of super matches coming up in the future, so please practice. I tell everyone, work on your endurance, so that that helps in both ways, states championship ho ya super matches ho. All right, so let's move further. Next, who we have? All right, Rahul versus Dikshit, 70 kg title. It's a title Hmm. shot. बरकत भाई आप बताइए पहले। राहुल वर्सेस दीक्षित जो गोल्ड मारे 70 केजी में। राहुल भाई भी थोड़ा हेवी है, तो वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। मैं दीक्षित भाई का तो गेम देखा नहीं, तो उनके बारे में बोल नहीं सकता।
हाँ हाँ हाँ। लेकिन राहुल भाई भी थोड़ा मुझे लगता है कि राहुल भाई जीत सकते हैं। ओके। लेकिन दीक्षित भाई का गेम देखा तो मैं बोल सकता था कौन नहीं गए, अंदाजा लगा सकता था। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि दसरा में दीक्षित ने हराया था, सॉरी, राहुल ने हराया था दीक्षित को। बाद में स्टेट हाँ में क्या हुआ, स्टेट में कि राहुल ने अरबाज को भी आराम से मारा है, आराम से पिन किया है, राइट। बट अरबाज ने दीक्षित को बीट किया है ना, प्रतीक, ही हैज बीटन हिम राइट इन द सीओसी। या यस हाँ। यस तो गुड। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, राहुल जीतेगा या दीक्षित? राहुल भाई अभी सेम वो स्टेट में जो उनकी पावर थी ना, वो प्रो पंजा की लीग में जो पावर थी उनकी वो पावर रहेगी, तो वो आराम से जीत जाएंगे। या तो उनकी पावर थोड़ी लॉस हो गई हो तो कुछ भी हो सकता है। तो खेला है क्या आपने राहुल भाई के साथ? राहुल भाई मैच देखा है, हाँ हाँ मैच हाँ। देखा हुआ है। खेला अच्छा तो नहीं अच्छा। है, मैच देखा हुआ है उनके, तो वो भी हेवी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, ओके ओके ओके। प्रतीक भाई? I think Rahul will win this match because he विथ? has leveled up since before. I've seen him beat very strong players in Bangalore. So looking at that, it is a clean win for Rahul. Unless Dixit does some surprise stylistically. Overall, Huh? who overall he has beaten right now yet? He is like in you Practice. mean Rahul? Rahul. He has beaten a lot of strong players in top roll, Who overall? Can you name them? but it doesn't count. It is a practice like Josilo and all. Only Joshua? Josilo, Josilo, lot of players. Okay. All right. Fine, fine, fine. So now, next, moving further towards Puneet versus Sharath. बरकत भाई, इन दोनों को जानते हैं आप? नहीं जानते? पुनीत भाई को जानते हैं, पुनीत भाई को जानते हैं। शरद अच्छा भाई वो पता नहीं। अच्छा। पुनीत भाई का तो हुक हुक बहुत स्ट्रांग है, प्रेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रेस मूवमेंट पे आ गया तो वो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, और ओके ना ओके। उनको तो केंचप्पा ने तो उनको प्रेस मूव में वो उठाया था ना, वैसा लो हैंड टॉप रोल मार के तो कुछ भी। लेकिन पुनीत भाई उस जगह में नहीं जीत सकते। उनका प्रेस थोड़ा बहुत फास्ट है, पर लो हैंड टॉप रोलर ना वो बहुत जल्दी उठा सकते हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है पुनीत विल विन इन दिस मैच? पता नहीं, ना गेस नहीं कर सकता। गेस नहीं कर सकते, राइट राइट, क्योंकि शरद के बारे में पता नहीं ना, तो या प्रतीक? Punit's strength depends on his preparation. I think if he's well prepared, then Punit will take the win. And also, Sharath has lost some weight, I heard, and Okay. he has endurance problem. He has, I And think, he Punit will. has cut down around 15 nahi. He's 112 right now. So he Hmm, was 130 when he had come for the state match. So it's around hmm, 18 kgs he has lost. So what do you think that, hmm, that cutting weight hmm. will be a problem for him? Yeah, I think it will be. Okay, So okay, also depends on Punit's preparation. If he's well in good shape, then Punit will win. okay, 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 perfect. Otherwise, So, Sharath will be able to hook him. mhm, okay. So the most hyped match we have is Kenchappa versus Shivaji Rao. साय बरकत भाई बताइए। केंचप्पा जीतेगा। 3-0? केंचप्पा जीतेगा। 3-0 नहीं है, लेकिन होगा। फाइट तो होगी उनकी, 3-0 तो नहीं होगा। फाइट होगी, केंचप्पा फाइट जीत होगी। जाएगा। अच्छा, हाँ। ओके। सो प्रतीक भाई, प्लीज टेक अस थ्रू। I think Shivaji will win 3-0. 100%? 3-0? Yeah, 3-0? yeah, yeah. Wow, wow, Because the wow. top roll versus top roll, right? There is Yes. nothing. There is nothing that can go wrong. So whoever is stronger will win. I think Shivaji is stronger, so Shivaji will win. Will win. Okay, Mm. okay, okay.
So I think we have covered up all the things like our training part and our super matches and the predictions. So before we end, we'll have a little talk about KSAWA organizing event. Then later on we'll move further with Bangalore Pullers. But I wanted to say something about it, like how they organize and the beginners, like whoever the newcomers, why should they join to PAFI or Karnataka KSAWA? Pratik bhai. Mainly because of the number of players and the quality of players. Right now, if you want to be the best, then you have to play against the best. So there's no point in playing against like 4 or 5 people in your category and winning a gold. If you have Mhm. to be the best, then you have to play against the best 40 in your people. category. Yeah, 50 people. I Only have then heard. you'll have that satisfaction. Yes. Otherwise, there's no point winning a medal and showing off. Right. And Pratik, I have heard in your category, majorly like 55, 60, 60, 65. In Hmm. the last PAFI nationals which happened, there were around like 200 people in one Hmm. category, and they've that particular category went for 2 days Hmm. to get to the final. I think it is considering youth, juniors, and seniors because Seniors, if you no only only the seniors, I seniors. don't think so because there are 28 states, only top three are allowed to play. If you Mhm. consider 28 into three, it is less than 100 only, Less than maybe 100. 75. Yeah, so it is not possible. 75 people. Okay, Yeah, maybe 200. yeah. That's what you're saying, like overall. Overall, Overall youth, 55 category. juniors, sub juniors. Yeah. Even I thought the same, but I don't know how the Hmm. calculation. But Tejas Gopi Hmm. said that, like, that particular Yeah. category, oh, 200 people were there, and, it took Hmm. 2 days to, complete that Hmm. particular category. So Yeah, that's what I think that is definitely considering youth, and seniors in because his if there category, are Hmm. Hmm. yes. Please tell me. Yeah, if you consider 200 people in senior, 200 people in youth, 200 people in juniors, then there will be like thousands of people. There are 3,000 Yeah. people overall. Oh, but Yeah. that's what it is not possible. If you could take top three winners of each state, it is not Mhm. possible. Okay, But Pratik hmm, bhai, one more thing I just wanted to ask on this, like in the PAFI nationals, what the matches happened. hmm, Started at 9 o'clock, ended at 1:30 at night. hmm. So should that happen in that way or not? No, it shouldn't happen. But again, people have things to do. You have to finish as fast as possible. But when there are a lot of people, you can't help it. It And shouldn't with happen. I heard even Hmm. Deepak sir said there were around 12 to 15 tables at a time. 7 tables were Hmm. the for the youth and this and that, but even in the outside there were around like Hmm. 4 to 5 tables where PID Hmm. standing, sitting, these were Hmm. happening. Hmm. Even with that, Hmm. 1:30 till 1:30 the match were happening. Yeah. So what do you think about this, like what they have calculated? Hmm. Was that like I think over then they should estimation? do para and juniors differently compared to seniors. Seniors there'll be a lot of players, so seniors separately they have to do conduct in a different month compared to other para juniors and all that. So that will Mhm. be better. That will be So if you try better. to do So what do you think? everything together, then people have to take so many days of leaves. Like if it goes for 4 days, 4 days leaves you should take. Okay. Hmm. Hmm. All right. So Pratik bhai, the last question that I have, can you please Hmm. talk about the Bangalore Pullers, the super match that Hmm. organized by Shashi and Hmm. taken care of this one by Deepak sir. So, what do Hmm. you think about this initiative for Karnataka?
Yeah, it's a great initiative. We should keep doing this. I think this is the first one. We should keep doing this every quarter. I would say it will be better. Like more people will come into the sport, and even if it is a small event, we should keep doing it. Is what I am saying. Mm-hmm. Okay. Fine. So, Also, we should Barkat, conduct tournaments, not only super matches, tournaments, also small tournaments. even the tournaments, yes. Yeah. You're right, Pratik bhai. So tournaments has to happen because how will we get to know like there are emerging the players Mhm. are there Yeah. to Most importantly, we should make videos and do a lot of publicity with these videos. if it is Like right. that is But how Pro Panja became popular hmm, because of the aftermatch videos and all that. that's right. But Barkat bhai is not into social media. हम तो फेमस कराना चाहते बट वो फेमस होना नहीं चाहते सो इस टाइम में हम क्या करें नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं हाँ ज्यादातर सोशल मीडिया में थोड़ा कम ही हूँ, ज्यादा यूज नहीं, थोड़ा कम ओके ही यूज होता है, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाता। Okay. So to all our athletes, I request this actually because when you are into super matches, just imagine there are like 400-500 लोग हैं in our कर्नाटका पाफी प्लेयर्स में बट नोन है अननोन है जो भी है पुराने हैं हर कोई कैलकुलेट करके there are like 400-500 athletes are there but you have chosen those 14 people 28 people is chosen that means you are the face of this super match जो इवेंट हो रहा है मतलब ये सेलेक्टेड एथलीट्स को ही हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें मतलब ये इसमें एक वैल्यू होता है तो हर एथलीट्स को ये एक गुजारिश है एक रिक्वेस्ट है कि मेक योर वीडियोस showcase your videos to the world to entire our Karnataka to the nation to the world ताकि हम भी आपको प्रमोट कर पाए अभी क्या है ना अभी देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ छोटा मोटा मेरे पास कुछ है और मैं बात कर रहा हूँ अगर आपका एक्चुअल लिफ्ट्स है आपका कोई वीडियोस है जहां मैं देख के मैं बोल सकता हूँ भाई आपने वो लिफ्ट किया तो मैं क्वेश्चन भी रेज कर सकता हूँ उस लिफ्ट के दौरान और आपके जो स्टेटमेंट्स भी होता है जो भी होता है तो उसके दौरान वी कैन मेक यू एज एन एथलीट वी कैन मेक यू फेमस बट वो फेमस एक तरफ से नहीं होता है ये दोनों तरफ से होता है तो टू ऑल आवर एथलीट्स प्लीज मेक श्योर मेक यूज ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म gain your publicity and make your career and the last we have come at the end pratik bhai Yeah. so before you get into the table Hmm. you both what that one sentence you hit to your opponent Sorry. Can you repeat? that one sentence before you get Hmm. on the table Hmm. what would you like to say to your opponent that one hit I don't want all the best this and that it doesn't work this is a face off just imagine you are at the face of right now Okay. So feel your wrist crack with the top roll. आहा लेट्स गो बरकत भाई उन्होंने बोला फील योर wrist क्रैक हाथ ऐसे क्रैक होगा करके बता रहे सो व्हाट्स योर वन सेंटेंस क्या बोलेंगे सर तो टेबल से मैं पहले कुछ नहीं बोल सकता, टेबल पे ही बोलेंगे। हाँ टेबल में बट जो क्या होगा बोलेंगे वही। वही क्या बोलेंगे टेबल में तो मैं ज्यादा, टेबल में भी मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जीतना सिर्फ यही हमारा मकसद है। हाँ बट तो वो बोल ऐसा रहे कि अपोजिट आज के प्लेयर को अपोजिट के प्लेयर को मैं ज्यादातर उनको निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी एक प्लेयर ही है। इसीलिए मैं उनको कोई भी प्लेयर अपोजिट में मेरा रहता ना, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो भी एक बहुत मेहनत से ही आए रहते हैं ना। इसीलिए हम कुछ नहीं बोलता इसीलिए। ये क्या है ना ये डेवन लैरेट क्या बोलता है पता है हाँ
जब एक सुपर मैच फाइनलाइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां से लेके सुपर मैच खत्म होने तक वो बंदा मेरे लिए एनिमी है, वो मेरे लिए, हाँ, वो हमारे लिए एनिमी है, ये मेरा जंग है। तो इसमें कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है। अगर हम फ्रेंड्स है, वो भी ये करता है, हार्डवर्क करता है, ये तो हर किसी को पता है, बट जीतना है मतलब जीतना है। अभी वो एज एन एनिमी आपको बता रहा है कि आपका हाथ रिस्ट क्रैक होगा, और आप बता रहे हैं हाँ भाई मैं टेबल में देखूंगा, तो ये तो बना ही नहीं ना, ये बात ही नहीं बना। नहीं, हम एनिमी को भी हम एनिमी नहीं समझते। हमारे अच्छा, कैसे? इसमें तो इस्लाम में ऐसा है, इस एनिमी को भी हम एनिमी नहीं समझते, वो भी हमारे तरह ही इंसान ही होता है ना, हाँ, उसको भी तो थोड़ा सही तरीके पे लाना पड़ेगा। तो बरकत ऐसा भाई, होता है। आर्मी में, आर्मी आर्मी तो पता है ना आपको, अगर हाँ, वो टेररिस्ट है तो वो टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट है, हाँ वो टेररिस्ट है। हाँ, तो अब वो क्यों, एनिमी वो है, उनके मुल्क के लिए। राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये जंग है। अभी जब तक ये हाँ सुपर हाँ मैच नहीं होगा, जंग है। ये ऐसे नहीं कि आप मारो तोड़ो फोड़ो, नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ कि हाँ उन्होंने आपको एक बोला है कि हाँ। आपको टेबल में आपका रिस्क क्रैक होगा, मतलब आप गिव अप कर रहे हो, मतलब आपसे, आपकी तरफ नहीं से नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि भाई वो आपका हाथ रिस्क को क्रैक करेगा ही करेगा। देखते हैं कौन रिस्क को क्रैक करता है, कौन रिस्क को लेके आता है। हाँ 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 हाँ, हाँ तो ये हुई ना बात। हाँ। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए देन, देखेंगे कौन किसका रिस्क क्रैक करता है और कौन पकड़ के रखता है। ठीक ओके, है, चलिए ऑल द देन, बेस्ट बरकत। ऑल द बेस्ट भाई आपको लेट्स भी। गो गाइस। Thank you ओके, so much for your time. Thank you so much for coming here, and you have given your precious answers and opinions. Means a lot. So सिर्फ 3 दिन, आज गए तो सिर्फ 3 दिन बाकी है। सो रेस्ट कीजिए, मेंटली प्रिपेयर होइए, मेंटली हाँ, कैसे मुझे जीतना है। अगर मेंटली आप जीत गए तो वहां आप 50% आप जीत गए, right? So, all the very best, guys. Once again, thank you so much. यस, थैंक See यू। you soon. See you soon. Take सी care, यू, guys. Good night. Good night. गुड नाइट। Good night, guys. So, May 31st, we are coming. We are waiting for you. Whoever in Bangalore, please come down on 31st. I'm sure this super match event won't let you down. Let's go. Take care. Good night.